So I think, sir, we can start. We have quite a number of participants and they can all join while we start our session. जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि फिर आगे डिले होगा आगे के लिए। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर, टुडे द well, friends, on behalf of the GHG Khalsa College of Education team and the collaborating unit, collaborating institutions, I extend a warm welcome to all the participants on this day 5 of our faculty development program. My special welcome to our esteemed guest today, Dr. Sanjay Kumar, who is working as a principal with Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Sir, I extend a warm welcome and thank you for your consent at our small notice. Thank you so much for being here with us. Dr. Sanjay Kumar is postgraduate in Education, Commerce and Marketing Management with a doctorate degree in Business and Management from JNU, Jaipur. Sir possesses more than 23 years of rich experience in academics, administration, research, accreditation, and the very need of today, that is online education. He has contributed more than 10 research papers in UGC notified national and international journals, in which, while one of his research papers has crossed 100 citations on Google Scholar. He has authored 4 books and has edited 7 books as primary editor and successfully conducted more than 30 online workshops on digital skills for teachers during 2020-21 and 21-22. He has presented more than 15 papers at national conferences on the topics of digital skills, virtual classrooms, digital citizenship, and digital safety for teachers, and has developed an online 30-hour certified digital teacher course for all levels of teachers. He completed a marketing research and analysis course from IIT Roorkee under NPTEL in 2017 and was a gold medalist with 93% marks. He has been awarded 7 times for his contribution to education and society, has completed the social media marketing specialization course from Meta and Coursera in May 2023. Currently, sir is the Secretary General of CTF Delhi NCR Chapter, Program Director of Social Development and Research Foundation, SDRF, and President CTF, Council for Teacher Professional Development, and is the Chief Editor for 2 national journals, EduLink and the CT National Journal. So, sir, I welcome you and truly acknowledge your credentials. I think the participants will cherish your deliberation today. So welcome to this dais, sir. And now over to you, sir, for further proceedings. Yes. Thank you so much, ma'am. बड़े अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे. आपका नाम जान सकता हूँ मैम? Sir, I'm Dr. Manu, IQAC coordinator from the host college G.H.G. KC. Dr. Manu. Thank you so much, Dr. Manu. Thank you, sir. And Thank you, sir. thank you so much, Dr. Pargat Singh Garcha sir, for inviting me. और मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा GHG खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि
आमतौर पर मैंने देखा है कि जितनी भी एफडीपीज होती हैं तो ये जो टॉपिक है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का, तो वो आमतौर पर ये जब गए हैं तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी, हाँ ऐसे कुछ हाँ नहीं दिख हाँ रहा हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। यस, अभी मैंने एक सेटिंग कर दी है इसमें जिससे कि बीच में डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। हाँ जी सर। जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा या तो वो थ्रू चैट और हैंड रेज कर सकता है, जिससे बीच में जो कभी कभी गलती से ओपन रह जाता है ऑडियो का, वो प्रॉब्लम नहीं। सो मैं बात कर रहा था कि कॉलेज को मैं बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में एफडीपी काफी दिनों में, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ तो देखता रहता हूँ, अपने आप में एक यूनिक टॉपिक भी है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये एफडीपी आप लोग करा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जीएचजी खालसा कॉलेज और पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस टीम। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा अपना सेशन। आज का जो टॉपिक है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, टीचर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन। मैं इससे पहले भी कुछ सेशंस को देख रहा था, थोड़ा बहुत बीच में मुझे टाइम मिला तो मैंने अटेंड भी करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा था, जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो लाइसेंसेस हैं कहीं ना कहीं उनको समझने में और फिर अप्लाई करने में, दोनों में कहीं ना कहीं उलझ जाता है टीचर और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, या तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस होंगे जिसमें दो ही तरह के होते हैं, या तो आप कॉमर्शियल यूज कर सकते हो या नहीं। और जिनको हम कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं उसमें भी टू टाइप्स के होते हैं कि या तो आप जिसने भी जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका नाम मेंशन करके और आगे यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इवन सेल भी कर सकते हैं। और एक में कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक फिर आपका होता है कि पब्लिक डोमेन में चीज रखी हुई है तो उसमें आपको कहीं भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती किसी के भी नाम की, इवन ओरिजिनल क्रिएटर की। खैर, फिर भी एथिकली अगर हम, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो या लाइसेंस के थ्रू हो, अगर हम यूज करें तो उसमें कोई बुराई है। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं बात करूंगा कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। और हम क्लासरूम प्रैक्टिसेस की बात करें और हम एक्शन की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें। ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग के पास काफी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं रिलेटिंग टू डिजिटल स्किल्स, लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकली आप हमें ये ऑर्गेनाइज कर कर दिखाइए या कर दिखाइए, तो वो लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। तो मैं जो आज का सेशन रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और मेरे जो क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट ऐसे होंगे कि आप सभी लोग उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस से रिलेटेड। टोटल मिला के आज हम 5 बातों पे, 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, इनका टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में हम यूज कैसे करें। और यूज में मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो बहुत फर्क पेडागोजिकली नहीं रह जाता है, बस एक्टिविटीज में रह जाता है कि आप लेसन प्लानिंग में यूज कर रहे हैं, आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं एक्चुअली टीचिंग में। तो वो एक फर्क है, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट कॉमन ही चलती हैं चीजें। उसके अलावा फिर चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम इन सारी चीजों पे एफडीपीज करते हैं और ये सब कुछ करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि चैलेंजेस क्या है और रियलिटीज क्या है। स्पेसिफिकली जब हम किसी भी इस तरह के मुद्दे की बात करते हैं जो ऑनलाइन है, जहाँ डिजिटल डिवाइसेस की जरूरत है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन उसको एक्सेस कर पाती है और कितनी नहीं कर पाती है। जब यूजीसी कहती है कि 40% कोर्सेज ऑनलाइन रन करने की प्लानिंग करती है, तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बाकी चीजें हैं। फिर कुछ केस स्टडीज जो बहुत पॉपुलर नहीं है, मैं ज्यादातर वो केस स्टडीज
पिक करने की कोशिश करता हूँ जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे कुछ ना कुछ इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। उससे ये पता हमें चलता है कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, इंस्टीट्यूशन ने वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक हमें मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कोशिश करें तो एक चेंज मेकर तो बन ही सकते हैं। और फ्यूचर क्या है फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का? डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को जो कहता है वो 3 टाइप्स के मटेरियल की बात करता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में। वो टीचिंग हो, लर्निंग से रिलेटेड हो, रिसर्च मटेरियल से रिलेटेड, फिर एनी फॉर्मेट, वो आपका वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इवन सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरह का। एंड मीडियम, डिजिटल और नॉन डिजिटल मीडियम हो सकता है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, आज का जो टाइम है जिसका मैं कहूँगा कि हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं, तो डिजिटल वाले पार्ट की ही बात करूंगा। और फिर इन्होंने बात करी पब्लिक डोमेन और अंडर कॉपीराइट दैट हैव बीन रिलीज अंडर एन ओपन लाइसेंस। तो ये दोनों में फर्क इतना ही है। पब्लिक डोमेन में तो जो क्रिएटर होता है, उसने चाहे कोई टेक्स्ट क्रिएट किया हो, वीडियो किया हो, वो कहता है कि ये लो, अभी आपका हुआ, आपकी मर्जी, इसको ऐसे ही यूज कीजिए, आगे ऐसे ही शेयर कीजिए, इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए। और कहीं भी इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप मेरे नाम का कहीं मेंशन करें कि ये मैंने ओरिजिनली क्रिएट किया था। यू आर फ्री, करिए कुछ भी जो करना है। वो पूरी तरह से डोनेट कर देता है उसको। और कॉपीराइट वाले जो लाइसेंसेज है, ओपन लाइसेंसेज, जो मैं बात कर रहा था, सीसी, सीसी बाय, सीसी बाय, ऐसे उनमें थोड़ा सा है कि कहाँ पे आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नॉन कॉमर्शियली। पर अगर मेजोरिटी में देखूं तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में आज के टाइम में मटेरियल बहुत इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको कि आप रीयूज करके, और एक तरह से आप ये मानिए कि आपका जो पर्पस है उसे मीट आउट कैसे करता है, आप यूज कर सकते हैं। मैं अक्सर अपनी कुछ प्रेजेंटेशंस में, पेटीएम का सोशल एक्सपेरिमेंट था, वो डिवाइड उसने टाइटल दिया था, और वो फाइनेंशियल इश्यूज को लेके था, लेकिन मैंने अपने काफी सारे एफडीपीज में उसका यूज डिजिटल डिवाइड को समझाने में कई बार किया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो किस पर्पज के लिए, क्योंकि ओरिजिनली जिसने क्रिएट करा है जिस पर्पज के लिए, जरूरी नहीं है आप उसी पर्पज के लिए यूज करें। आप अपने हिसाब से किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। कुछ पॉपुलर ओईआर इंडिया में है, जो एक लिस्ट है, लेकिन हम बात करेंगे बेसिकली कि हम इनका यूज कैसे करें। क्योंकि जितने भी पॉपुलर ओईआर है, आप गूगल पर जाइए, और इवन अब तो गूगल बार्ड का यूज कीजिए, क्योंकि गूगल तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देगा। आप गूगल बार्ड में लिखिए कि क्रिएट ए लिस्ट या गिव मी ए लिस्ट ऑफ पॉपुलर या टॉप 20 ओईआर इन इंडिया, तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे देगा। तो रिसोर्सेज पे जाना मुश्किल नहीं है, असली काम है कि हम उन रिसोर्सेज को आज के टाइम में यूज कैसे करें, क्योंकि रिसोर्सेज पर तो हम सभी पहुंच रहे हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं डिजिटल और नॉन डिजिटल में डिजिटल की बात करूंगा, तो अगर देखा जाए तो जो एक बड़ा चेंज दुनिया में आया, वो ये आया कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, जिसका कि ऑफिशियल बर्थडे अगर मैं बात करूं तो 1983 जनवरी 1 है। वहां से एक बहुत बड़ा चेंज, इवन जो मेरी एज के आसपास के लोग होंगे, उन्होंने दोनों तरह की लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से देखा, कि बिफोर इंटरनेट और आफ्टर। क्योंकि ये 1983 में वर्ल्ड में तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया की बात करूं तो 15 अगस्त 1995 में ये आया। और कमर्शियल, या कहूंगा कि लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन और वो सारी चीजें होने में, और पब्लिक को इजीली अवेलेबल हो पाए, उसमें भी काफी टाइम लगा। आफ्टर 2000 ये सब पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ से चीजें बदलनी शुरू हुई। इवन इतना बदल गई कि विदाउट डिजिटल स्किल आपको लिए एक दिन भी निकालना मुश्किल है। अगर आप कुछ परचेजिंग करने जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना है, कुछ भी करिए जिंदगी के किसी भी हिस्से में, तो आप
डिजिटल वर्ल्ड के एक मेंबर हैं, एक सिटीजन है, उससे बच नहीं सकते, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर भी नहीं बच सकता। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी की बात करूं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे एजुकेशनल रिसोर्सेज पे आना है। तो हम टेलीग्राफ और टेलीफोन से स्टार्ट हुए थे, और कहीं मिड में फिर पर्सनल कंप्यूटर और डब्ल्यू जिसे आप कहते हैं वो आ गया। फिर मोबाइल फोन्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट। डेफिनेटली मोबाइल फोन्स ने या स्मार्टफोन्स ने जिंदगी बदल के रख दी, दुनिया बदल के रख दी। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआर और वीआर की बात कर रहे हैं। और जब दुनिया इतनी आगे आ गई तो डेफिनेटली जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे कि वो फ्री में अवेलेबल हो पाए, तो वो पॉसिबल है जब हम डिजिटल टूल्स का यूज करें और इंटरनेट का यूज करें। और डेफिनेटली जब हम इनका यूज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू भी आएगा, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँ। कुछ सर्वेज की फाइंडिंग्स जो टॉप बॉडीज हैं वर्ल्ड की, इवन उनमें से कुछ यूनेस्को की भी डिपार्टमेंटल बॉडीज हैं जो सर्वे कराती रहती हैं, तो उन्होंने पाया कि जिन कंट्रीज में आईसीटी का या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन क्लासरूम टीचिंग में है, उनसे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। आप बच्चों का एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, बच्चे इंगेज हो रहे हैं। कि मतलब अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते तो डेफिनेटली आपने भी देखा है, वो बड़ा कॉमन सी बात है कि आज के टाइम में हमारा कितना एंगेजमेंट अपने स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के साथ रहता है। तो सिमिलरली जब आप इंटीग्रेशन एजुकेशन के साथ करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो लर्निंग में भी जो एंगेजमेंट है वो उतना ही इंक्रीज हो जाता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग और अचीवमेंट, एक पर्सनल लेवल पे अपनी स्टाइल में लर्निंग होना बच्चे की, वो जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वो आईसीटी या आपके जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, बहुत ही ज्यादा। टीचर ने किसी बच्चे को एक वीडियो लिंक शेयर कर दिया या पूरी क्लास को कर दिया, तो वो इतना पर्सनलाइज हो गया कि डिपेंड करता है कि किसी को किस टाइम देखना है, किसी को कितनी बार देखना है। किसी को एक बार में देखकर चीजें समझ में आ रही है, किसी को 3 या 4 टाइम्स भी देखना पड़ रहा है उस चीज के लिए। तो एक वो जो पर्सनल टच होना चाहिए था लर्निंग को लेके, वो जो पहले नहीं दे पा रहे थे, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज्यादा दे पा रहे हैं। ग्लोबल रीच एंड एक्सेस टू एजुकेशन, बिल्कुल घर बैठे हुए आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में किसी भी कंट्री का वर्ल्ड वाइड जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वहां से रिसोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर उन्हें अपनी प्लानिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान चीजें हो गई हैं, और जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली जो एक टीचर की इफेक्टिवनेस है वो नजर आएगी, वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। और आप कभी भी देखेंगे जो टीचर्स आईसीटी का या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का अपनी टीचिंग में यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे कर रहे हो, कंपेरेटिवली आप बेटर पाएंगे। और इसका एक एस्पेक्ट और भी है, जब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि टीचर का जो प्रोडक्शन है लर्निंग का वो बढ़ जाता है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कंट्री में जिसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो टीचर वाली हो या बाकी हो, जब वो प्रोडक्शन ज्यादा शुरू करना कर देती है तो डेफिनेटली उसका जो जीडीपी है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वर्ल्ड से भी इसका लेना देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करेंगे हम अपने रूटीन प्रैक्टिसेस में, तो डेफिनेटली हमारे कंट्री को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है इनडायरेक्टली, ना कि सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा कि हाउ OER सपोर्ट्स बोथ टीचर एंड स्कूल एजुकेशन। मैंने इस ईयर में और कुछ 2-3 इयर्स बैक 2 जगह से 2 कोर्सेज किए, एक कोर्सेरा से और एक नेपटेल से। दोनों ही ओपन लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। और मैंने जो रिसेंटली किया वो कोर्सेरा से किया। मैंने ये चीज इसलिए आपके सामने रखी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रख पाऊँ, क्योंकि कुछ कोर्सेज इंटरेस्ट होने की वजह से मैं इसलिए भी करता हूँ कि जिससे मुझे ये पता चले कि
एक्चुअल में जो वर्ल्ड क्लास जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो इस तरह के रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनका अपना पैटर्न क्या है, वो किस तरह से स्टोर कर करके रखते हैं चीज़ों को, उनका पेडागोजिकल अप्रोच क्या है। तो मैंने देखा मेटा में, क्योंकि मेटा और कोर्सेरा दो अलग अलग वो है। मेटा इज द तरह से कह सकते हैं कि जो फेसबुक है आपका, उसकी उसके जो मालिक हैं, जो कंपनी है, वो मेटा है। दोनों मिलके इस कोर्स को चला रहे थे। तो मैंने इस कोर्स में जो कुछ स्पेशल चीजें पाई, जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो देख रहा था, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स था। प्रैक्टिकल मीन्स कि अगर इसको कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग ना कर पाऊँ किसी बिजनेस की, तो फिर उसको करने का कोई फायदा नहीं था। और डेफिनेटली जब मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं कर पा रहा हूँ। कुछ मेरी ऐसी चीजें हैं जो मैं लाइफ में करता हूँ, तो इस कोर्स को करने के बाद 100% में प्रैक्टिकली उस चीज को कर पाया। तो कुछ चीजें जो मैंने वहां ऑब्जर्व करी, उनके वीडियोस होते थे, बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियोस होते थे, और एवरी 5 या 10 मिनट्स 3-4 क्वेश्चंस असेसमेंट किए जाते थे। फिर कंप्लीट वीडियो के बाद एक असेसमेंट आ जाता था। फिर वो बीच में आपको प्रोजेक्ट देते थे। तो वो इंटरेस्टिंग इतना था कि आप यकीन नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए जो अपना एक अच्छा खासा प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इस तरह के ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। टॉप क्लास सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज ऐसे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जो 2 आवर्स तक के या 3 आवर्स तक के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो इवन कई बार ऐसा होता है कि हम वैल्यू एडिड कोर्सेज या कुछ कुछ वर्कशॉप्स हमें अपने बच्चों की करानी है, तो वी कैन प्लान कि एक टीचर खुद पहले उस कोर्स को कर ले, फिर अपनी पूरी क्लास को रजिस्टर्ड करा के और उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, जो भी 2-3 आवर्स की होती है, और बच्चों को कह सकते हैं कि उस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। द कोर्स इज फ्री, सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और एक एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखिए, ओपन एजुकेशनल कोर्सेज किस तरह से रन करते हैं, उनकी लर्निंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। और एक जो बहुत बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती थी कोर्सेरा के कोर्स में, उन्होंने कहा कि ये जो हम आपको दे रहे हैं सर्टिफिकेट, ये आपके लिए 2 इयर्स के लिए वैलिड है। आफ्टर 2 इयर्स हम आपका फिर से एग्जाम लेंगे, और ये चेक करेंगे कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी प्रैक्टिस है, मेंटेन है। अदरवाइज फिर ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो लाइसेंस है आपके पास मेटा सोशल मार्केटिंग का, मीडिया मार्केटिंग का, ये फिर कैंसिल हो जाए आपका। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कोर्स के साथ। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं, हम अपने क्लासरूम में, इवन स्कूल में, कॉलेजेस में कोर्सेरा पर जाके आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोर्सेज हैं वो सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो। वो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या, और स्पेसिफिकली डिजिटल स्किल्स को लेके तो बहुत ही ज्यादा कोर्सेज इस पर है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है कि OER को इंटीग्रेट कैसे करें क्लासरूम प्रैक्टिसेस में। तो हमें अपने क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, क्योंकि OER का जब हम यूज करेंगे, तो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे मैं रिजिड इंफ्रास्ट्रक्चर कहूंगा, उसको फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें कि एक तरह से मानिए कि आपके स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिस पर कि हम उनको रन करके OER के जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो दिखा सकते हैं। हम अपनी क्लासरूम में ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो फिर फटाफट उनको ग्रुप में अरेंजमेंट हो सकता है क्लास में। मतलब फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट हो, सेटिंग का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के तो साथ साथ है, तब जाके जो एक्चुअल में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, उनका बेनिफिट अच्छे से होने वाला है, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। एग्जिस्टिंग क्लासरूम में अगर मेरा अचानक मन करे कि मुझे ग्रुप डिस्कशन कराना है, मुझे अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर कुछ एक्टिविटीज करानी, यानी कि जब मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने अपने टीचिंग मेथड्स के साथ, पॉसिबल ही नहीं हो पाते। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आती है वो आ जाती है क्लासरूम की अपनी रिजिडिटी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। कई बार मैं देखता हूँ बहुत से टीचर की सब इस टॉपिक पे हमें एक FDP अटेंड करनी थी या कुछ करना था, लेकिन कहीं हो नहीं रही है। ये दूसरा जो एक जरूरी चीज आ जाती है कि FDP API के लिए करनी है
या एफडीपी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए करनी है, कुछ सीख कर चेंज मेकर बनने के लिए करनी है। यहाँ पर एजुकेशन में एक बड़ा गैप है। मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं, जब भी कुछ सीखते हैं तो उनको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप अगर सीखते हैं तो वैसा सीखिए कि आप उतना फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, और अप्लाई करने के बाद चेंज कर पाए दूसरों की लाइफ में, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि फ्री है। और हम अपने कंट्री की बात करें, जीडीपी कहीं भी जा रहा हो, हमारे कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो या तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, या अगर पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी है तो आप उन्हें बहुत रिच तो कह नहीं सकते या उस तरह का अफोर्ड करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब आप उठाएंगे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी तो आपको मिलेगा कि किसी भी फैमिली में 1100 या 200 के बीच का कोई फिगर है पर पर्सन पर मंथ अर्न करता हो तो वो उससे ऊपर है पॉवर्टी लाइन से, अदरवाइज वो नीचे है। कितना बड़ा अमाउंट होता है आप देखिए। उससे डिजिटल रिसोर्सेज और डिजिटल डिवाइसेस पॉसिबल नहीं है। और 30 to 40 करोड़ लोग तो इस तरह के हैं हमारे कंट्री में जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो बीपीएल कार्ड जिनके पास होता है। तो सोचिए उससे जस्ट ऊपर वाला भी तो ऑलमोस्ट वैसा होगा कि वो उन चीजों को ना अफोर्ड कर पाए। तो ओईआर फ्यूचर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इन्वेंशन एजुकेशन में जिसमें कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके एजुकेशन की, डेफिनेटली हमारे कंट्री को तो बहुत अच्छा बेनिफिट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है कोर्सेरा, और आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। अब पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस लर्निंग की बात किया, मान लीजिए आपकी क्लास में आप बच्चों को मैं कहूँ छोटे बच्चे हैं डायनासोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपने देखा कि मेरी क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को रीडिंग करना बहुत पसंद है और कुछ बच्चे वीडियो के बड़े शौकीन है। मतलब अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए तो एक बच्चा प्रेफर करेगा मैं सर बुक पढ़ूंगा, दूसरा बच्चा प्रेफर करेगा कि मैं वीडियो देखना पसंद करूँ। यहाँ पर आपके पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में पॉसिबिलिटीज हैं कि आप उनकी नीड, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी प्रेफरेंस, उनके पेस के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और उनकी लर्निंग में हेल्प करें। दूसरा आता है फिर इंक्लूसिविटी, एवरीवन मैटर्स। मान लीजिए आपकी क्लास में सारे बच्चे डिफरेंटली एबल हैं, या ऐसा कुछ ले लेता हूं कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्क्रीन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम ओईआर की बात कर रहे हैं और मैंने आपको क्लासरूम भी दिखाया था, तो आप भी जो को कहते हैं इंक्लूसिबिलिटी ला पाएंगे जब कुछ पॉसिबिलिटी आपके हाथ में होगी कि आप रिसोर्सेज में चेंज कर पाए। क्योंकि ओईआर में क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज आया अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस करते हैं और फिर अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। तो मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट जिनको द साइज ऑफ द लेटर छोटा लग रहा है, वो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, डिफरेंट लेवल बच्चे आपकी क्लास में, तो स्क्रीन पर इजीली आप साइज ऑफ द लेटर इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रीडिंग में अभी प्रॉब्लम है, उनको आप ऑडियो का प्रोविजन कर सकते हैं। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल्स, देयर कैन बी मोर देन 1000 पॉसिबिलिटीज। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके इनोवेशन पे, आप कैसे सोचते हैं, क्या सिचुएशन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर आप जो ओईआर है आपकी टीचिंग मेथड्स में इनोवेशंस और क्रिएटिविटी, यानी कि आप अपने टीचिंग मेथड्स में एक्सपेरिमेंट्स करें और कुछ क्रिएटिव करें, और पर्पस एक ही है। आप जितने भी बेहतरीन अच्छे मेथड्स हैं जिन्हें कहते हैं ये दीज आर द एडवांस मेथड्स, जब भी उनको पिक करेंगे तो
उनमें नजर आएगा कि लर्निंग मस्ट बी पार्टिसिपेटरी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्नर एंगेज होना चाहिए, इतनी सारी चीज। तो आप जब अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो आपके पास, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं एक्सपेरिमेंट करने की। आप वीडियो यूज कीजिए, आप ऑडियो यूज कीजिए, आप पिक्चर्स यूज कीजिए, आप इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कीजिए, बहुत सारी चीजें जिनका यूज कर सकते हैं और अपने टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिव बना सकते हैं फॉर बेटर लर्निंग। ये एक कॉमन पॉइंट है जिसमें कि ये है कि कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है, लेकिन इनिशियल जो कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए स्पेसिफिकली, वो एक कॉस्ट है, वो मैटर करती है और वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आगे मैं डिस्कस करूंगा चैलेंजेस। इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। अब वो जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो अभी बहुत ही लिमिटेड लोगों तक पॉसिबल थे, वो रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में भी जा रहे हैं, वहां पर भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप कभी देखिएगा कि जो एवरी ईयर आईसीटी अवार्ड्स जो गवर्नमेंट देती है, नेशनल अवार्ड टीचर्स को, आप कभी उनकी स्टोरीज देखिएगा। डिफरेंट टीचर्स जो हैं, प्राइमरी टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो कर रहे हैं वो ये नहीं इंतजार कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेंगे। लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद ही बदल दिया, इंडिविजुअल लेवल पे चेंज कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं और इस चीज में कहीं ना कहीं जो OER है वो हमारी हेल्प करती है। और इसके बाद है फिर बच्चों का इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात। हम बहुत बात करते हैं कि बच्चे इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों, बड़े होकर स्टार्टअप करें, सिर्फ जॉब के बारे में ना सोचें। तो अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस। मैं मानता हूं कि जब 50 और 40 और 60 बच्चों की क्लास होती है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सभी को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। ये फॉर्मेलिटी होती है कि कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किया, फोटो खींच लिया कि जी हम सबको पार्टिसिपेट कराते। लेकिन जो एक प्रैक्टिस के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चाहिए बच्चे को, वो ट्रेडिशनल अप्रोचेज में नहीं हो पाता। अब करें कैसे? तो जब करना है तो वो ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ हम OER की तरफ को देखते रहें और हो जाए। मान लीजिए कुछ बच्चे बहुत अच्छा ब्लॉग रन कर सकते हैं, ब्लॉग क्लब बना लीजिए, ब्लॉग कमेटी बना लीजिए, डू वट एवर यू कैन, और रखिए उसको अपने करिकुलम में, जैसे भी उसमें कुछ मार्क्स जो भी कुछ है, और चेज करने दीजिए उनको अपने जो पैशन है उसको, और उन्हें हेल्प कीजिए डिफरेंट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिंक्स प्रोवाइड करने में, सोर्सेज के लिंक्स प्रोवाइड करने में, कि किस तरीके से अपने ब्लॉग्स को और अच्छा बना सके। हेल्प कीजिए उनकी कि और जो उस तरह के ब्लॉग्स चल रहे हैं वो कैसे अच्छे चल रहे हैं, क्या रीजन है। बच्चों को करिए ना एंगेज। बच्चे अपने आप में एक नई चीज क्रिएट करेंगे, और जब क्रिएट करने की बात आती है तो फिर आप ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो लेटेस्ट में देखते हैं कि उसका लास्ट पर्पस क्या क्रिएट, ऑटोमेटिकली जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने आप अचीव होते चले जाते हैं जब आप क्रिएशन की बात। पॉडकास्ट बड़ा पॉपुलर और ट्रेंड में है, बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। आप उनको दीजिए प्रोजेक्ट्स, आप एनवायरमेंट क्लब बनाइए, आप हेल्थ से रिलेटेड बनाइए, आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाइए, बच्चों को दीजिए मौका पॉडकास्ट का, दे विल डू। यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाइए क्लासरूम का सेपरेटली, बच्चों को एंगेज कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप उनको प्लेटफॉर्म बताइए, उसको फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से कनेक्ट कीजिए, उनको एंगेज कर सकते हैं आप, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं सोचने की, करने की, और कुछ नया क्रिएट करने की। सिर्फ उन्हें असिस्ट कीजिए और सिर्फ उन्हें फैसिलिटेट कीजिए। फिर एक और बड़ी अच्छी चीज है, जब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आप सभी ने, आई होप,
ये मैं मान के चलता हूं कि स्लाइड शेयर का यूज किया होगा। जरा मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं कितने लोगों ने स्लाइड शेयर का यूज किया है। चैट बॉक्स में मुझे यस लिख कर बताएं कितने लोगों ने, और नहीं किया तो नो करके भी बता सकते हैं। कितने लोगों ने किया यस करके बताइए मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस। ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने स्लाइड शेयर पे कंट्रीब्यूट किया है। आई मीन कि आपने अपना अकाउंट बनाकर उसमें अपनी स्लाइड को अपलोड किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर एजुकेटर्स। जिससे आपने वहां से पिक किया, कितने लोगों ने खुद की स्लाइड्स को अपलोड किया है। खुद जो अपलोड करने वाली बात है उसमें यस जो आया मेरे पास वो कम आया, यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर अभी भी जो मेजोरिटी में है वो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो क्रिएट नहीं कर रहे। वो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को कंसीडर करके पढ़ा तो रहे हैं, उसका जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो खुद ही उस पर काम नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि तुमने क्या क्रिएट किया, क्या कोई तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, क्या कोई तुम किसी फेसबुक पेज है जो ये क्लासरूम का कोई फेसबुक पेज बना लिया या ग्रुप बना लिया जिसपे कुछ किया, ऐसा बहुत कम देखने को। कंटेंट डाउनलोड किया, शेयर किया, ये आपको ज्यादा में मिलेगा। टीचर्स को थोड़ा सा अपने आप को इस तरह की उसको शिफ्ट करके क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रिएट करना बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए, जो हमारे यहाँ पर तो बहुत कम कर रहे हैं। इसके बाद, और इसमें है क्या देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है स्लाइड शेयर। इसमें मैं और आप ही एक अकाउंट बना के हम अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो शेयर भी, मतलब अपलोड भी करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं यूज के लिए। तो आप देखिए कभी भी किसी भी टॉपिक पे जब आप जाएंगे स्लाइड शेयर पे, आपको किसी भी टॉपिक पे एक बनी बनाई स्लाइड मिल जाएगी। जैसे हम ओपन लर्निंग रिसोर्सेज से लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए और आप भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप लेते ही ना रहें, कंट्रीब्यूट भी करें, वरना इस तरह के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, सिर्फ लेने वाले लोग ही रहेंगे। वर्चुअल लैब, कितने लोगों ने वर्चुअल लैब्स को यूज किया है? लेट मी चेक, अगर ये पहुंच पाता हूं मैं वर्चुअल लैब में। मेरी आवाज तो आ रही है? जरा यस करके बताइए मुझे अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग। यस सर। ओके, ये गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है वर्चुअल लैब वाला। और इसका जो पर्पज है, ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में से एक है कि थ्योरी को प्रैक्टिस करो। मान लीजिए हमारा ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में आपको कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर समझना या समझाना है बच्चों को। आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिसोर्स है, और जिसमें थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, एनिमेशन पे चलते हैं क्योंकि एनिमेशन ये बताता है कि भाई आपको बच्चों को कराना कैसे, देख लो एक बार। वीडियो नजर आ रहा है सभी को? आई मीन कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो अभी आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। स्लाइड नजर आ रही है मेरी अब?
एक्चुअल स्लाइड को देख पा रहे हैं आप? यस सर, वर्चुअल लैब्स की स्लाइड दिख रही है। ओके, हाँ मतलब मैं यही पूछ रहा था, मैं वापस आ गया ना वर्चुअल लैब की स्लाइड पर। जो मैं अभी आपको वर्चुअल लैब का वो दिखाया था, गवर्नमेंट का अपना एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है जो वर्चुअल लैब है, और आप उसमें फर्स्ट से लेकर 10 तक के या उससे भी ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अब इस तरह के रिसोर्सेज को यूज करके आप थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अंडरस्टैंड करना है, यूज करना है, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चीजों को समझने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। यही सारी चीजें, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो टीचर एजुकेटर हो, उनको रिसोर्सेज का यूज करना है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जहां से भी जैसे भी आपके ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स को पूरा करते हैं उन रिसोर्सेज का यूज करना। और सारी चीजें ऑलमोस्ट गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस जरूरत है तो एक विल पावर की कि आप उसको यूज कर पाए। इसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दीजिए लर्नर्स को आपस में सीखने की। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में जब कोविड था तो जो आपका गूगल सर्टिफाइड टीचर एक कोर्स है, उसके करिकुलम से बोरो करके एक छोटा सा, और ऐसा कि जिससे कि आसानी से जो बीएड के स्टूडेंट से समझ पाए, 30 आवर्स का एक डिजिटल टीचर कोर्स प्रिपेयर किया, और सोर्स में लिखा कि देखो ये दो चीजों से, एक कोर्सेरा से और एक वहां से, दो जगह से मैंने उसको बोरो किया। उसके बाद मैं देखता था कि जब सेशन हो जाता था मेरा लाइव और डिस्कशन होता था तो बच्चों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे रह जाते थे। वो फिर कभी कभी फोन करके मुझे पूछते थे, कई बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता था। तो मैंने उन लोगों को कहा कि ठीक है, हम एक ना व्हाट्सएप पे क्लोज्ड ग्रुप बनाते हैं। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब होता है हम ही होंगे, कोई बाहर का नहीं होगा उसमें, और जिसको जो प्रॉब्लम होगी उस ग्रुप में शेयर करेगा, और मैं जब भी मेरे पास टाइम होगा तो आई विल आंसर, या मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से आंसर पता करके और फिर मैं आपको बताऊंगा। जब ऐसा हमने स्टार्ट किया तो मैंने देखा डेली 3-4 क्वेरीज होती थी, और वो 3-4 क्वेरीज जब तक मैं देखता तो बच्चे जो बाकी थे वो ही सॉल्व कर दिया करते। मतलब आंसर या क्वेश्चन पूछने वाले भी बच्चे थे, उनको आंसर देने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले भी बच्चे थे, आंसर देने वाले भी स्टूडेंट थे। अब वो खुद से ही सीख रहे थे, वो सीखने वाले भी थे और सिखाने वाले भी थे, सिर्फ एक ग्रुप क्रिएट करने की वजह से। फिर एक बार सेशन हुआ तो मैंने पूछा कि तुम सबको तो इतना कुछ आता नहीं है, फिर ये इतने आसानी से आप लोग आंसर्स कैसे कर पा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि सर, हम लोग यूट्यूब पर जाकर या बाकी जगह जो ओपन एजुकेशनल सोर्सेज है वहां पर जाकर हमने आंसर फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर आंसर कर देते हैं। तो वहां से मुझे समझ आया कि देखो, जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं बाकी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में, तो लर्निंग का जो पैटर्न है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जगह पर आ जाती हैं जिनमें हम कहते हैं कि हायर लेवल के मेथड्स होने चाहिए, बच्चे एंगेज हों, खुद करके सीखें, वो सारी चीजें अपने आप आने लगती हैं, वो एक्सप्लोर करने लगते हैं जब उनको इंटरेस्ट आने लगता है, और इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स में आप उन्हें इन्वॉल्व करते हो। इसके बाद है फिर चैलेंजेस। चैलेंजेस में सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है, ऐसे मान लीजिए वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, मैं कहूं कि मुझे कोर्सेरा पे कोर्स करना है तो मेरे पास या तो मोबाइल फोन हो या इंटरनेट और लैपटॉप हो तो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो जिनके पास है वो एक तरफ, जिनके पास नहीं है वो दूसरी तरफ, और ये जो बीच में लाइन है, दिस इज डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड की क्या स्थिति है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ होते हैं जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, बाकी चीजों की, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है ना, स्कोप अपॉर्चुनिटी भी काम करने का वहां पे ज्यादा होता है। तो डिजिटल डिवाइड वाले एरिया में बहुत काम करने की जरूरत है, इंडिविजुअली भी और इंस्टीट्यूशंस को। एक
कोविड से जस्ट 3 महीने पहले का एक सर्वे था, NSSO, 2 साल तो फिर कोविड रहा तो कुछ हो ही नहीं पाया होगा। उन्होंने सर्वे में बताया कि अर्बन हाउस होल्ड्स जो हैं वहां पर 23% लोगों के पास डिजिटल डिवाइसेस। एक आम सी भाषा में कहूं तो तकरीबन 77 हाउसेज ऐसे हैं शहरों में जिनमें कंप्यूटर्स नहीं है, या डिजिटल डिवाइड का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स की बात करूं। और जब यही डेटा रूरल एरिया में चेक करा गया तो पाया कि सिर्फ 4% घरों में कंप्यूटर थे। ये कोविड से 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। फिर 2 महीने कोविड रहा तो हार्डली 1 डेढ़ साल का गैप हुआ तो बहुत चेंज नहीं आया होगा। फिर मैंने उसमें इंटीग्रेट करा इंटरनेट कनेक्टिविटी को, क्योंकि आज के टाइम में हम ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज या ICT किसी की भी बात करें तो विदाउट इंटरनेट तो कुछ भी नहीं। जब मैंने इंटरनेट को भी इंटीग्रेट किया कि भाई कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, तब क्या स्थिति है, तो मैंने पाया कि बिलो 10%, शहरों में सिर्फ 9.5% घर ऐसे थे जिसमें कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन थे, और जब रूरल एरिया में गए तो ये परसेंटेज 0.6 हो गया। यानी कि 100 में से एक घर भी ऐसा नहीं था जो इंटरनेट विद कंप्यूटर विद इंटरनेट। यहां पर फिर बता दो, स्मार्टफोन मैंने शामिल नहीं करा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम कभी भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ICT की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, जब ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर फोकस करें। यानी कि डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल कराना ये एक बहुत बड़ा काम है, और इसमें तीनों तरह के लोगों को लगना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, और चाहे वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे हो, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर ले जाना होगा अगर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करना है। इसके बाद फिर एक और न्यूज थी जो कोविड के बीच में थी, 6 मई 2020 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज मोर रूरल नेट यूजर्स देन अर्बन। तो न्यूज जब टाइटल देखोगे न्यूज का तो बड़ा कैची सा है कि रूरल एरिया में ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन हो गए एज कंपेयर टू अर्बन। पॉसिबल है, 65% पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही रहती है, उसका ऑलमोस्ट हाफ शहरों में रहता है। और वो इसलिए पॉसिबल है कि जब बिल्कुल स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए थे और वो ऑनलाइन चल रहे थे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कनेक्शंस तब बड़े होंगे। तो ये इंटरनेट कनेक्शन की बात है, डिवाइसेस तो थी लोगों के पास। खैर, अब इन दोनों बातों से एक चीज तो तय हो गई कि जब भी कभी हम प्लान करें कि भाई किस तरह की लर्निंग का मॉडल तैयार करना है तो करें, लैपटॉप्स की बात करें और स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये ज्यादा अवेलेबल हैं। तो बेहतर है कि हम इस मॉडल को ऑप्ट करें कि ऐसे रिसोर्सेज तैयार करें, ऐसी वेबसाइट्स हो जो मोबाइल फ्रेंडली हो, ऐसे रिसोर्सेज हो जो मोबाइल फ्रेंडली हो, तब जाके वो ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। और इसी के बेसिस पे मैंने फेसेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेड है, बैड फेस, जहां पे टीचर्स के पास रिसोर्सेज तो हैं, इनकम्प्लीट रिसोर्सेज हैं, पूरे नहीं है, और वो ट्रेंड भी नहीं है। और तीसरा अगली फेस है जहां पर ये सब है ही नहीं। और अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, अगर एक बार आप जाए तो जो अगली फेस है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ 0.6 और 9.5, हार्डली 10% घरों में कंप्यूटर विद इंटरनेट, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात करूं तो 90% में तो है ही नहीं। तो ठीक से ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो सिस्टम का होना, इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। तो गुड फेस और बैड फेस तो हमारा ऑलमोस्ट 10-12% में आ जाता है। सो जो अगली फेस मैंने लिखा, बहुत काम करने की जरूरत है। क्यों कहता हूँ बहुत काम करने की जरूरत है? जब हम बात करते हैं ना अपने स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि हम आउटरीच एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा बड़ा एरिया है जो आपके प्रोजेक्ट्स इस एरिया को
फोकस करके होने चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल ये होना चाहिए कि उसके आसपास के जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वो अपनी कंप्यूटर लैब्स का यूज के बच्चों के लिए करें, उस तरह की चीजें हों, हम ओवरकम कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली खासकर गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस को करना पड़ेगा, तब जाके चीजें हो पाएंगी। दूसरा था ट्रेनिंग की बात जो हम करते हैं, अभी मैंने पीछे बात भी की, एक पिक्चर आपको दिखाई थी है बेड फेस वाली। 9-8% वाले यही लोग हैं जिनको अच्छे से ट्रेन कर देंगे तो ये अगली फेस को गुड फेस में कन्वर्ट करने में एक अच्छी खासी फौज का काम करेंगे। अभी रिसेंटली सितंबर 8 2023, हार्डली 2-3 महीने हुए हैं, एनएसएसओ ने एक सर्वे किया और बताया कि 15 से 29 के जो एज के लोग हैं, ये थोड़ा सा कुछ एक एक्स्ट्रा चीज क्या कहते हैं टाइप हो गई है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अप्रोक्स 27.5% पॉपुलेशन क्लासिफाइड डिजिटली स्किल्ड। अब यहाँ पर एज ग्रुप देखिएगा 15 to 29, ये हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो जिसका जो ब्रॉटअप है, जिसको जो एक्सपोजर है वो डिजिटल वर्ल्ड का मिला है, सिर्फ उनका परसेंटेज 29 के आसपास है। 71% यूथ पॉपुलेशन बिलो 30 डिजिटली स्किल्ड ही नहीं है। और ये जो डिजिटली स्किल्ड लोग हैं मेजॉरिटी में वो कॉर्पोरेट में काम करने चले जाते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं आते। अगर इसका और डाटा को फिल्टर करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर जब ट्रेनिंग की बात आती है तो मैं एक कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, डिजिटल इमिग्रेंट्स एंड डिजिटल नेटिव। डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल नेटिव ये दो टर्म्स हैं, और एक अमेरिकन ऑथर थे मिस्टर प्रिंस काय, उन्होंने इन टर्म्स को दिया। और किस बेसिस पे दिया मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 1983 में वो ईयर है जो ऑफिशियली बर्थ ईयर है इंटरनेट का। तो उन्होंने यूएसए में किया और ये देखा कि वो लोग जो 98 से पहले पैदा हुए और जो लोग जो बाद में हुए, इम्पैक्ट को लेकर क्या डिफरेंस है। उन्हें पाया कि जो लोग 1983 के बाद पैदा हुए वो लोग, उनका ब्रॉडर डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ था, उनका एफर्टेबल थे और बहुत अच्छे से वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। दूसरी तरफ जब जाते हैं डिजिटल इमिग्रेंट्स, ये वो लोग हैं जो अपने एजुकेशन के लास्ट स्टेज में आके कॉलेज लेवल पे, या मैं कहूंगा कि जब जॉब में थे तब इन्होंने डिजिटल स्किल्स को सीखना शुरू किया। इन दोनों तरह के लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस। अब मैं इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं। इंडिया में 1995 ईयर को अगर मैं जो ऑथर है प्रिंस का, उनके हिसाब से जो उन्होंने सर्वे किया था उन्हीं के बेसिस पे एक डिवीजन करूं तो मुझे काफी हद तक ना उन जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि 1995 को एक डिवीजन डिवाइड कर लें कि जो पैदा हुए 1995 से पहले और बाद में, यानी कि इंटरनेट का जो बर्थ ईयर इंडिया के अंदर, तो आप पाएंगे कि 1995 से लेकर अब तक के 28 से 29 साल ही होते हैं। तो अभी मैंने स्थिति आपको बताई कि 28 या 9 ईयर तक का जो बच्चा है 15 से 16 साल से लेकर, मात्र 29% स्किल्ड है, डिजिटली स्किल्ड है, बाकी 70% नहीं। ये स्थिति तो उनकी है जो हमारे यहाँ डिजिटल नेटिव्स है, डिजिटल इमिग्रेंट्स को तो छोड़ ही दीजिए। फिर जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन होते हैं, आप कभी भी देखिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, वो फोकस ही नहीं करते इस बात पे। डिजिटल इमिग्रेंट्स अलग तरीके से सीखेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी लेट एज में आके डिजिटल स्किल्स को ट्राई करना शुरू करा, और डिजिटल नेटिव्स की सीखने की स्पीड अलग है। दोनों को सेपरेटली अलग मॉडल में ट्रेनिंग देनी होगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। और एक बड़ा चेंज लाना है, बहुत जल्दी लाना है, क्योंकि इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हैं कंट्री पर। अभी 30 से 60 तक के, यानी कि 30 साल का जो गैप है वो उन लोगों का है जो डिजिटली इमिग्रेंट्स है, डिजिटल नेटिव नहीं, जो बहुत धीमे से सीखते हैं,
जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, जो प्रेफर नहीं करते, उन्हें ऑप्शंस दोगे तो वो ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के बजाय जाकर भरना पसंद करेंगे ऑफिस में जाकर। ये उस तरह के लोग हैं। डिजिटल इमिग्रेंट्स वो हैं, जब कोविड खत्म हुआ तो वो ये कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, अब वापस वो उस वाले पैटर्न पे हम चले जाएंगे जैसे थे, और वैसा होने वाला नहीं था। और बहुत से डिजिटल नेटिव भी ऐसे हैं जो डिजिटल इमिग्रेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है ये शायद ऐसा ही रहेगा, स्लो होगा, जबकि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो ट्रेनिंग में जब भी बात करूं ट्रेनिंग की, तो आपको फोकस करना होगा डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल नेटिव्स। थर्ड चैलेंज है डिजिटल सिटीजनशिप। इसमें कॉपीराइट और उस सब पे काफी बातें प्रीवियस सेशंस में हो चुकी हैं, तो मैं ज्यादा नहीं कुछ बताऊंगा। ट्रेनिंग सपोर्ट की बात हो गई हमारी। रिलेटेड केस स्टडीज। मैम 10 मिनट्स मुझे और मिलेंगे? सर वैसे आप 10 मिनट्स में वाइंड अप करने की कोशिश करते नहीं, हैं। वाइंड अप ही करूंगा मैं 10 मिनट्स में, मुझे ठीक है टाइम सर, पर ठीक है, फोकस है। डन डन, यस सर, यस सर। जी। रिलेटेड केस स्टडीज। केस स्टडीज में मैंने कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, तो डिजिटल दान एक इनिशिएटिव है, बॉम्बे में एक प्रोफेसर ने लिया कोविड के टाइम में। कॉलेज में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो जो बच्चे थे डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि सभी के फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे नहीं होते। अचानक क्लासेस बंद हो गई, तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों से करके एक मिशन चलाया, और 250 या उससे ज्यादा स्मार्टफोन्स अरेंज किए अपने स्टूडेंट्स के लिए, और सक्सेसफुली उनकी क्लासेस को ड्यूरिंग द कोविड चलाया। ये जब एक सिचुएशन आ गई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तब उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये डिजिटल दान वाला कॉन्सेप्ट हर इंस्टीट्यूशन में हर लेवल पे हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी के पास वो हो। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, वो आपने देखा भी डिफरेंट सर्विस के थ्रू। एक ये इनिशिएटिव हो सकता है, और इंडिविजुअली जो 250 टाइम्स इम्पैक्ट कर सकता है, चेंज मेकर बन सकता है, तो फिर इस तरह की चीजें या इससे मिलती जुलती चीजें होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में। ये भी पार्ट होना चाहिए एक्टिविटी का। दूसरा जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो एक प्राइमरी टीचर की है, जो अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर एक साइबर कैफे पे आके क्या करते थे, वो जैसे कौन बनेगा करोड़पति है उस तरह से एक वेबसाइट बनाई उन्होंने, और उन्होंने 10th तक का या 12th तक का, जो 10th तक का जितना भी कोर्स था सीबीएसई की किताबों का, वो उन्होंने क्विज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या दिखाई देता है इस स्टोरी में, कि एक इंसान ने एक अच्छा खासा 10th तक का ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रेडी कर दिया, जिसको कि लेकर अगर इसको कोई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन करता तो पता नहीं कितने साल और कितना बजट और कुछ होता। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली भी एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, चेंज मेकर बन सकते हो, स्टार्ट करने की जरूरत है। तो इस तरीके से भी चीजें या प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। यहाँ पर ये एग्जांपल मैं इसलिए लेकर आया कि जरूरी नहीं है, पहले भी मैंने कहा कि हम जो औरों के ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज करें, हम उन्हीं में कंट्रीब्यूट करें। हम छोटे छोटे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है, और ज्यादा कस्टमाइज्ड बेनिफिट अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को पहुंचा सकते हैं। एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, गूगल और टाटा ट्रस्ट की है। इनका एक प्रोजेक्ट चलता है इंटरनेट साथी, जिसके थ्रू उन्होंने मोर देन 20 लाख वुमेन्स को रूरल इंडिया में ट्रेन किया डिजिटल स्किल्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से इनका क्या लिंक है। मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने महिलाओं को क्यों ऑप्ट किया। उन्होंने कहा कि एक तो वो खुद में ज्यादा अकाउंटेबल थी, मोर इकोनॉमिकल थी, उनको मॉनिटर करना आसान था, और सबसे अच्छी बात उन फीमेल्स में ये थी, उस एरिया में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो पाया उन्होंने, कि जब एक फीमेल डिजिटल स्किल्स को लेकर घर जाती है तो वो पूरे के पूरे परिवार को सिखाती है, जबकि मेल मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं था, उनके डिफरेंट वेज में पाया गया। तो ये सिखाया उन्होंने, और सीखने के बाद वो फिर महिलाएं बहुत सारी चीजें, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई,
अपने हस्बैंड के लिए जॉब सर्च करनी हो, ये सारी चीजें मोबाइल्स के थ्रू कर रही थी। लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें स्कूल प्रैक्टिकल्स जो उनके बच्चे पढ़ते थे स्कूल्स में, उन प्रैक्टिकल्स को, जो मैंने अभी आपको लैब दिखाई थी, ये लोग उस लैब का यूज करके उन बच्चों को थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते हैं, ये वो महिलाएं वहां पर कर रही थी। यानी कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो इनिशिएट लिया था गूगल और टाटा ट्रस्ट ने, जिसमें मोर देन 20 लाख वुमेन्स को ये ट्रेंड कर चुके हैं, वो महिलाएं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का यूज कर रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इतने अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आप और हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर क्यों नहीं कर सकते, सोचने वाली बात है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ OER की बात करूं मैं एजुकेशन में, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो या वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये सब आने वाले टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड होने वाली है। ग्लोबल कोलैबोरेशंस, डेफिनेटली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ग्लोबल कोलैबोरेशंस तो का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप आ जाता है। तो फाइनली आज जो हमने डिस्कस किए वो इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फिर OER सपोर्ट कैसे करता है टीचर और स्कूल एजुकेशन को, चैलेंजेस की भी बात की मैंने, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई कि उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, केस स्टडीज भी देखी हमने, लोग कैसे अपने लेवल पे लगे हुए और उसको जो है कर रहे हैं। और फाइनली एलन मस्क, द CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, जो उन्होंने कहा, इफ किड्स कैन बी सुपर एंगेज्ड इन वीडियो गेम्स, there is a way for them to be super engaged in education as well. Thank you so much. Dr. Manu, would you like me to proceed? Yes, Dr. Ghislaine, please continue. Yes. Yeah, thank you so much. First of all, I would like to thank the organizing committee for giving me the opportunity to propose a formal vote of thanks for this particular session. I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Dr. Sanjay Kumar, for sharing his valuable expertise and knowledge with us all today. Sir, your articulate presentation, which had some real world examples, some very practical insights, case studies, I'm sure all of this has empowered all the participants today with a very clear perspective on the potential as well as the importance of incorporating OER in our educational system. So you talked about and you conveyed some very intricate nuances of utilizing OER. For example, you talked about creating personalized learning environments, self-directed learning through ICT usage and OER. You talked about how we can, improve academic performance of both the students as well as the faculty. And more importantly, you talked about creating inclusivity, customization of material, integration of various formats, individualized educational practices for development of students as well as the teachers. So these strategies, these methodologies that you've shared with all of us will definitely benefit us all in fostering an environment of innovation and creating some very good and best practices in the education realm. So once again, I thank you from all of us here for sharing your valuable expertise and taking out the time and for your valuable contribution for this particular FDP. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay. Thank you. Dr. Ghislaine, I think we can proceed further. We have Dr. Rekha with us for the second session, so you may proceed.
Thank you so much. So moving forward, I would like to introduce our next resource person, Dr. Rekha Chavan. She is the Associate Professor from Department of Education, SNDT Women's University, Mumbai. Dr. Rekha is a teacher educator working in the field of education for the past 17 years with excellent ICT skills. She has a very deep understanding of education systems and teaching learning process. She is passionate about integrating and incorporating ICT in the teaching and learning. She is proficient in the use of Moodle, learning management systems, Google Classroom, Canvas to deliver courses through blended and online mode. Her area of interests include educational technology, e-learning, MOOCs, OERs, and open educational practices. She has successfully completed several MOOCs on OER and has developed and deployed an online course under UNESCO's Open Education for Better World project. She has been associated with this project since 2019, and currently she's playing the role of the hub coordinator for the same project. Apart from that, she has published several papers in international and national journals. She's also the member of Board of Studies in Education Technology, member of Website Development Committee, and member of E-Learning and Digitization Committee of the university. So without further ado, I request Dr. Rekha to take the session forward. Welcome, ma'am. Yeah, thank you very much for the brief introduction. As from my introduction, you must have come across my area of interest. So first of all, I want to congratulate the principal and especially Dr. Pagat for taking up this particular initiative of OER. As we know, especially after pandemic, how it was made compulsory for every teacher to go for online teaching, ICT integrated education. So in this particular context, it becomes utmost important to understand how we can design the MOOC so that we can, our teaching will not be limited only to the four walls of a classroom, but we can extend our horizon to the people around globe. So for us, it becomes very important to understand how to design MOOC. So first, let us understand what is MOOC. So without further delay, I would like to share my screen. So now I'm sharing my screen. Just tell me if my screen is visible or not. One sec. Ma'am, I'm not finding the icon for sharing. Ma'am, share screen. Can anybody guide me? Yes, ma'am, share screen. Yes, yes. Yeah, I could see. Thank you. Yes. Is my PPT visible to everyone? Yes, ma'am, it is. It is. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, perfect. Okay, thank you so much. Thank you for your feedback. So as I said, yeah, I'll just make it full screen so that. Yes, ma'am, please. Yeah. Oh, so sorry. Wait, just a minute. Ma'am, from current slide. I'm not finding the full screen. It is over. Ma'am, from current slide or go for F5, either of the two. Either go for F5 on your laptop or from the current slide. From current slide. Yeah. Better? No, ma'am, not yet. Is it full screen? Yeah. Yes, is it ma'am. full screen now now? it is full screen. Yes, ma'am. Oh. Perfect. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes. Yes. Thank you. So today my topic is design and development of MOOC using the OERs. As I said in the beginning, our classroom teaching is no more limited for four walls of a classroom. Now we have to extend our horizon to reach out to the masses, to reach out to the people who are maybe not be staying in India, but staying abroad. So in that case, if I am reaching to the masses, if my aim is to reach out to the people across the globe, it becomes utmost important for a teacher to know about MOOCs, how to design MOOCs, how to plan for MOOCs. So that will be the focus of my presentation today. So moving on to the next slide, I have a look at your agenda of my presentation. So first we are going to discuss about what is MOOC. Then we will also try to understand the types of MOOCs. Then definitely we will have a look at SWAYAM's 4 quadrants of MOOC. Then
if anybody wish to plan for a MOOC, how to go about, how to design the resources, how to develop the activities for offering the MOOC, and what are the various platforms which can be used. And definitely, I would also like to pay your attention towards learner-centric MOOC, because one of the problem for the MOOC is, people join the MOOC. So at the beginning, they are very much enthusiastic, very much interested. But as the course moves on, it is generally observed that they lose the interest, they lose the motivation. So how we can make our MOOC more learner-centric? It is very important to make your content learner-centric in a physical classroom. But especially in case of MOOC, where your audience is not in front of you, you are not able to meet your audience physically. So in that case, what kind of activities I need to develop, what kind of resources I need to use, that will make my MOOC learner-centric. So we will also try to pay attention toward that aspect. And definitely, I would also like you to go through the various platforms which are used for offering the MOOCs. And at the last, we will discuss about the advantages and limitations of MOOC. So this will be the brief agenda of my presentation today. So as the first point comes is what is MOOC? As we already know, the abbreviation MOOC. M means massive, O means open, another O means online, and the last C is known as courses. Let us see what does it mean. Massive, vishal, vyapak. We need to offer the courses. As I said, we need to extend our horizon for the global citizen. So in that case, it may happen, my classroom, especially the MOOC classroom, maybe consist of students of thousands, lakhs, and so on, depending on the, what kind of course I have designed and what kind of target audience I'm catering. Then another O means open. It is open for everyone. There is no any kind of constraint in terms of age, in terms of gender, or in terms of any other, criteria. Then when we are talking about MOOC, it is always online. Internet is the most necessary for offering any MOOC courses. And the last thing is a course. We have to design a course. Maybe a course may vary in terms of credit, in terms of hours or duration of the course, in terms of the content which you will be offering, in terms of the pedagogy which you will be offering. So you need to design your course for the MOOC. Now, when we talk about MOOC, as I said, massive. If you look at this particular M word, it means massive. So my students may be 100, my students may be 1,000, it may be 10,000, or sometimes it may be 1 lakh, depending on the scope of my MOOC. So in that sense, it is massive. Then coming to the next abbreviation O. O means open. So here, I just remove this bar up. Yeah, it's better. Yeah. So O means open content. O means free of charge. O means affordable. Sometimes it may be free of cost. And sometimes you may need to pay the fees depending on, like some courses, we can access the course freely. But when it comes to giving the certificate, you need to pay a certain amount. Say, for example, some courses, they are asking for paying 1,000 rupees and then you can get the certificate of completion. So like this, sometimes your MOOC can be free of cost, or sometimes it may be affordable rate. And open registration. Anybody can, enroll for that particular program. So that way, open means these are the various aspects. Now the next is online. So online means real-time interaction. You need to be connected with the internet, and you need to be present online whenever you are, delivering the lecture, or whenever you are having the, synchronous sessions. In your MOOC, you may have the synchronous as well as asynchronous session. So for synchronous sessions, real-time interaction becomes a mandatory component. And I especially feel whatever matter your course you are designing or whatever content you are designing, make sure that at least once a week or fortnightly, you should meet your audience, so that, because that human touch is very important. As I said in the beginning, the biggest drawback of MOOC is sustaining the motivation and the completion rate. Because as the course proceeds, many times it has been observed, and even researchers has found out, the completion rate is very low and very few people, they successfully complete the course.
So this is maybe because of the, absence of a human factor. So if you plan certain activities which are offered in a synchronous mode, then it becomes, human touch component can be bring in the course, and you can make your course more lively in that sense. So like real-time interaction. And then the course, it is self-paced. So the starting dates and the ending date is mentioned, but it's a choice is given to the learner. They can ask for their pace. They can devote the time. Some may devote 2-3 hours. Some may devote more than that hours, depending on the availability of the time. So self-paced, start and end date. Many of the courses, they have the start and end date. Then college credits. Sometimes some courses, some institute or colleges, they also have the CBCS pattern, wherein choice-based credit system. So suppose if I'm doing any 2 credit course from the SWAYAM, that credit will get reflected in my mark sheet or in my certificate. So that way, college credits are also assigned sometimes. Some books also provides the badges. I especially want to mention here, for which I also earn my badges after completion of the course. So it depends what kind of strategy you have designed. After completion of the course, are you offering the certificate or are you providing the badges after completion of the course? Then role of instructor, learning community, and scripted assessment and feedback. Now, how scripted? It is expected, learners are expected to submit the assessment activities, and then the feedbacks are provided. Again, depending on the nature of MOOC, it may be feedback per week, or it may be after completion of the entire course. So this is how generally the MOOC process looks like. We are moving to the next slide. I'm not moving to the next slide. I think some internet issue. Just a minute. Yes, ma'am, you're not able to. I think your slide is not moving. Slide had changed, or am I on the same slide? No, ma'am. No, it hasn't. Now it has changed, right? Yes, ma'am, it has. Yes, now it has. Okay, thank you so much. Yeah. So we have already discussed maximum is there may be 1 lakh or student in a MOOC or more than that, also depending on the scope of your MOOC. Open is anywhere, anytime, anyone can register for these courses. Then it is obviously online. You need to have an internet connection if you are planning to offer the MOOC course. So course is delivered entirely over the internet, and MOOCs are very similar to most online courses. Many times we offer online courses. So the structure and the way of delivering will be same as the way we prepare the online courses, and many times we offer the online courses to our college students. So it will similar to that. Now MOOC, as I said, it stands for the Massive Open Online Course. It is a new form of education for students who want to advance their skill at a level and cannot access traditional education due to the n number of reasons like the financial problems, the geographical accessibility, disability, and so on. So this is a advantage for the students who want to pursue the education, but because of the financial burden or because of non-availability of the course in their particular area, the problem of these particular things can be tackled with the use of MOOCs. MOOC have a lot of reading material. It can have the lectures, videos, so users can refer to, and they can enhance their learning. MOOCs are all about learning at your own pace. The learners can log on to the portal whenever they wish and access the course. As I said, though they mention the start and end date, but it's up to the choice of the learner how much time he or she wish to devote for that particular program. So it is an innovative approach, obviously, to impart education overcoming the time, age, and other relevant constraints. Just now I spoke about the constraints in terms of gender, in terms of accessibility, in terms of financial constraint. So it overcome all those constraints. And if anybody wish to aspire to learn, advance their learning, they can definitely enroll for the MOOC courses. It is available for masses and open for all. It includes both credit and non-credit courses. Sometimes if it is credit course, and if your college or institute has a provision to credit under CBCS system. CBCS system is about credit-based
choice-based credit system. So some universities, like in our university, Ascended University, we have this pattern, and we are offering this particular pattern under which if any student from education, they wish to go for a short-term course in music, they can also avail those courses. It's not only for students, but also for teachers. They can avail these courses, and they can definitely take the advantage of these courses. So we have already discussed massive, designed for unlimited number of participants, much larger than the traditional face-to-face class or a traditional online course. Access to the course is free without entry qualification. Anyone can enroll. It doesn't require prerequisite of level of performance in earlier studies. Like many of the online programs or many of the courses which we offer in a traditional mode, we generally keep some kind of criteria or some kind of prerequisites. But when you are thinking of taking up any MOOC, this is not a condition. So anybody can avail those courses online. It is offered via internet and does not require physical attendance at classroom. But if the course is offered in a synchronous and asynchronous mode, then maybe whenever you have synchronous sessions, you may ask the participants to join these synchronous sessions. Anyone from anywhere the world can, with the internet connection, can participate in the course. Now the course, the content is offered through a course. The course includes, materials, quizzes, feedback, examination, and certificate of completion. Now, there are two types of MOOCs. CMOOCs, that is known as Connectivist Massive Online Learning Course. So these courses are generally developed in collaboration with the students and teachers together. And these are the collaborative development where the material are designed and developed with the help of students. So these are known as CMOOCs. Then we have XMOOCs. X means Extended Massive Open Online Course. It has a specific course structure as per which the course must be finished. It aims that the user has to get a certificate after studying the subject matter, and there is a cost associated with getting the certificate. So I would say all the courses which we are getting from SWAYAM, they come under the category of XMOOCs. And CMOOCs can be, like for example, in our SNDT, we have a practice of offering the courses through Moodle. So that will come under CMOOCs, wherein the teachers design the course, and that course is only limited to the students of SNDT University. So that way it can be CMOOCs, it may not be XMOOCs. XMOOCs is for the larger population, for the masses, and you may have the students beyond India or across the globe. But when we talk about CMOOCs, it may be limited for your contextual need, and you may design those MOOC courses only catering for your students and not for the outside person. So this is how we have these two types of MOOC courses. Now, when we look at the features, it heavily relies on the different web formats. We need to use a lot of platforms, maybe for designing your activities, maybe recording your videos, maybe preparing the quiz. So you need to have the web resources ready whenever you are planning to go for a MOOC. So it requires a use of various web formats, maybe for, as I said, for making videos, for, maybe you may make use of Canva for designing your material or for designing the infographics. Similarly, there are various softwares which are available, which you can use it to design activities for your MOOC. So it requires web formats. It also involves a collaborative learning. Emergence of learning communities where the input of each participant enriches the course. So it's a two-way communication. It is not expected whatever material I as a teacher uploading on the portal will be the one-way communication, but your participant may be more knowledgeable in that particular area. So it will be the exchange of information between the teacher and the student. So that way it is a collaborative. Students also, I get an opportunity to learn many more things, which mean I may not be exposed of, which I may not be familiar with. It happens mostly with the advanced technology. Nowadays, your students are more aware about the use of different ways of technology than us. So in that case, I may learn something from my students as well. And my student may be of more experience than me, or he or she may be more aged than me. So in that case, knowledge may not always pass on from one person, teacher, to the student, but sometimes there is a possibility that I may learn from my
student as well. So that way it is a collaborative learning. Both collaborative construct the knowledge. Then MOOC offer tools to assess the transfer and retention of knowledge. It is when you design your course, during while designing the structure of your course, you will have the formative assessment as well as the summative assessment. So from that, you will come to know how much knowledge has been transferred, how much knowledge whichever I have offered through my MOOC has reached to my learners, and how much they could retain. So I may have different kind of assessment activities through which I can make out how much retention has taken place, right? So that way it is a knowledge assessment. And time limit. MOOCs have specified start and end dates. But in case, if you are not able to complete it, then again you can, if you have done everything and your only assignment is remaining, so you can submit your assignments and later you can get your certificates after you complete everything. But the course will offer, when I say start and end date, it will be offered in that duration. So later on, maybe you may not able to access the course once the course has ended, right? So that way it will have a start and end date. But it will not be the end date for a learner. Learner after completes everything, all the assignments, and if they fulfill their criteria, they can, get the certificate. So from the learner's point of view, it may not be end date, but while offering the course, it may have a specific start date and it will have a specific end date. Maybe after that, the access will not be available for the learner. So again, it depends on the MOOCs. Sometimes they will keep it open for another 1 month, so that whoever has the assignment, they will get ample time to work on their assignment and they can submit. So that way, the time limit again may vary from MOOC to MOOC or from the programs which you are enrolled for. Now, I would like to pay your attention towards SWAYAM MOOC's 4 quadrants, because many of you must have applied, or many of you might be aspiring to apply for SWAYAM courses. So let us first understand, when we are designing any course for MOOC course for the SWAYAM, we need to offer a course in these 4 quadrants. So quadrant 1 is about the e-tutorials, wherein generally the recorded lectures are developed, and those will come under the quadrant 1. Then quadrant 2 is about the e-content. E-content may be your learning material, maybe your e-book, maybe other form of learning material which you have designed, your worksheets and all those things. Then quadrant 3 will be the discussion forum. MOOC is a sustenance of motivation and interest. So in that case, discussion forum also act as keeping the student engaged and to listen to them what difficulties they are facing. So it is very important you involve some discussion questions in your MOOC so that you can tackle their queries related to the content or related to the process, or maybe related to some technical aspects while designing the activities, while uploading the activities. Maybe some participants might be finding it difficult to convert the file from one format to another format. So in that case, you can help them out through the discussion forum, wherein they can post their queries in a discussion forum. That discussion forum again may have dual purpose. One discussion forum specially meant for content related discussions, and other you can have a chat or some other way of discussion through which, if any difficulties the learner faces, they can can be addressed through these discussion forums. And the quadrant 4 is about the assessment. It is very important to have the assessment activities in your MOOC, because when we talk about education always starts with the objective. Then accordingly, we give the experiences, and it always ends with the evaluation or assessment. Otherwise, your teaching learning process cannot be completed. So with that sense, it is very important to have the assessment activities in your MOOC. And that assessment activities should be both formative as well as summative. Now, again, paying attention to these 4 quadrants along with some examples. So as I said, e-tutorials are generally your recorded lectures. It can be podcast, or it can be video lectures, depending on how you want to deliver your content. You can make use of multimedia instructions, and sometimes you can ask experts from your field or some experts from that particular area, and you can have their lectures. So that will be e-tutorials. Second thing is e-content. E-content are the self-instructional material. It can be ebook, or it can be downloadable resources.
or it can be in the form of PDF, or it can be in the form of infographics, and so on, depending on the nature of your subject, depending what kind of variety you want to bring in your e-content. So it's always good to have the various forms of e-content in the form of reading material, in the form of ebooks, or some kind of videos. Here, when I'm saying video, it may not be the lecture video as we have in a tutorial, but small clippings videos, and then the discussion may be based on that. So that way also you can have the e-content, or you can generate your own PDF, which you want the participant to read and get some more information, because many times your 1 hour lecture or 30 minutes lecture may not be sufficient to understand the concept. So in that case, if you provide some extra e-content along with your lectures, the participants may get a better insight about the subject. Then self-assessment, it may include MCQs, or it may be problems or case studies or quizzes or assignments and solutions. So again, it depends on the nature of your subject, and it also depends on how creatively you are asking your students, or how you are evaluating your students. Then comes discussion forum. As I said, it can be used for raising the doubts and clarifying them. Peer and coordinator interaction, it becomes very important, because getting the feel of getting associated with your classmates and with your teacher is very important. And that is possible through the discussion forum. So for that reason also, it is very important to have the collaboration between teacher and the student. And sometimes you can have the discussion forum wherein you can form the groups, and within the groups, the student discuss certain things, and you can reply on their feedback. So you can provide the related links. Suppose you don't want to embed the discussion in your MOOC, then you can have the external groups, like we have Google Groups. So that also can be used as a discussion forum. And you can make use of Wikipedias and other OERs also as a part of your discussion forum. So moving on to, again, to what all things will come under quadrant. I'll briefly, I have already explained, briefly I will just read out. So it can be the video or audio content. As I said, it can be a recorded video or a podcast in an organized form. Animation, simulation, video demonstration, virtual lab, etc. So all these things will come under quadrant 1, that is tutorial. Quadrant 2 will be e-content. Again, you can see here a variety of e-content you can design as per the need and as per the interest of your learners. So suppose you are preparing a MOOC for a school children, then definitely variety of content should be there. So PDFs, text, some ebooks, then documents, then self-instructional material, then case studies, presentation, etc. So such can be e-content. Sometimes you can also provide the related links, and you can just provide the link, and you can ask the participation for further information. Please go and read more about this particular topic on that link. So that way you can provide the related links. Then open source content on the internet, video, case studies, research papers, journals, anecdotal information, some historical development, some reports, some statistical information you want to give from the various resources, that also can be your e-content. Again, depending on your content and depending your audience, what kind of content you want to deliver. Then comes quadrant 3. It's a discussion forum. So as I said, you can have within a MOOC, it can be embedded, or sometimes you can have an external source wherein you can provide the link for the discussion. Then a discussion forum for raising the doubts and clarifying them in a real-time basis by the course coordinator or his team. Sometimes if the course coordinator doesn't have time to answer the queries, then they can appoint some people and they will deal with the queries which are coming from the participants. So that way you can either have it dedicated team for solving the doubts, or you can coordinator can also play the role depending on the availability of time. Then quadrant 4, it is about self-assessment. So here again, you can bring the variety in terms of problems and solutions in the form of MCQs, fill in the blanks, matching the questions, short answer, long answer question, quizzes, assignment, project discussions, then FAQs, clarification on general misconception, etc. So that kind of variety you can bring when you are going for an assessment. So this is all about 4 quadrants of MOOC, and generally
though you are not applying for SWAYAM, but if you follow these 4 quadrants, you can reach out to the learner and you can do the justice for every aspect of your course if you try to incorporate these 4 aspects in designing your MOOC. Now, if anybody wish to go for a online course for SWAYAM, or anybody wish to apply for the course, this is the procedure. It might be the possibility that some resource person might have taken. So briefly, I will just explain you this procedure and then we'll go to the next one. So we have a dedicated national coordinators who are looking after this MOOC in a comprehensive manner. The identified courses is then advertised in a newspaper and other media calling for expression of interest. So generally they ask for a expression of interest. Anybody wish to, design a course for a SWAYAM, they can have an expression of interest. And if there is expression of interest gets selected, they can be selected and they can be asked to design the course. So after evaluating the EOI, that is expression of interest, the NC, that is national coordinators, identify the course coordinator for each of the course based on the quality of sample content, the reputation of the expert or an institute, and the teaching learning methods proposed. Because how differently you are going to deliver course, that also matters. So depending on your teaching learning methods which are proposed in your proposal, or depending on that, you will be your expression of interest may be either selected or rejected. And after that, they invite a developer to prepare a MOOC within 6 months from that date. So this is how generally the procedure is followed if anybody wish to go for a course designing for SWAYAM. Then for your proposal, when you are preparing a proposal for MOOC, these are the points you need to keep in mind. So the introductory module, you need to define the course design, qualification for taking the course. You also need to mention who will be the target group and what are the prerequisite criteria I expect in my course. Then introductory video, what this course is about, how long this course will be offered, and what all content will be delivered, and what is the significance of this course can be mentioned in your introductory video. And what will be the nature of assessment system? Does the course has any credit? If it is, how many credits will be awarded? And what is the starting and ending date of your course? And what are the expected outcomes? Now, when I say expected outcome, what are things the learner will be learning after they complete the course? So that will be your expected outcome. Then scheduling of the course. It may include lectures, reading material, assignments, quizzes, test into weeks, and short modules. So generally, while preparing the proposal, you also need to mention week-wise what all content will be offered, and you also need to divide your content into modules. Then instructional videos to be prepared along with the transcript, multimedia techniques to be used, and the name of the teacher on the camera. So there are specific instructions pertaining to recording the videos. So please, if you go to the SWAYAM website, all those guidelines are provided. So if anybody wish to go for a SWAYAM courses, please read out those guidelines and accordingly make the arrangement and record the videos as per their guidelines. Otherwise, it may be the possibility that your content or user may not get selected. Then details of running materials such as lecture notes, additional reading to be provided, and so on. So you need to, sometimes you can provide the URL, or sometimes you can provide some detail about what kind of references or reading material you are providing in your course. So those things you need to bring in your proposal when you are planning to prepare a proposal for MOOC. Then self-assessment modules, the total number of quizzes and assignments to be provided for the course. Suppose my course is for 6 months. So how many quizzes I'll be offering? Will the quizzes be offered fortnightly or after every week? So those things need to be properly structured and mentioned in your proposal. Then assessment system. Will the assessment be weekly, bi-weekly, and assignment that will be required to be taken by the students? So how many assignments? What will be the weightage of that assignments need to be mentioned in terms of the hours, in terms of the marks as well. Then reading material and extra readings. Then self-assessment modules. After every module, probably you will design certain quiz or certain MCQs, and you will be testing the knowledge of the learners in order to just understand how much they have retained or whether the knowledge has been properly transferred or not. So you will have the self-assessment modules and the discussion forum, which includes a list of teaching material, answering queries registered by the students. So this will be the nature of your discussion forum.
Now, if you are planning to develop the MOOC, I am just sharing one format prepared by our university. So this is how we prepare the format. So you need to mention the name of the instructor and for which course, for example, MAd, B.Ed, so that you need to write, and who will be your target audience, who will be your course is meant for whom, whether it will be meant for only the college student or it is meant for the special professionals. So like that, you need to mention the profile of your learners. Then duration in terms of hours, how many hours it will be offered, and how many credits, whether it's a 2-credit course or a 4-credit course, and how many hours, that you also need to mention. And then you can have the course modules. The entire course will be divided into, suppose it's a 4-credit course, so maybe you will have the 4 modules. If it is 2-credit course, so maybe you will have 2 modules, and that module will basically consist of the content which you will be offering and also the assignment for each module. Maybe you will have module-wise assignment, or you may have only one assignment at the end, considering both the modules. So depending on how you are structuring your course, you may have the modules. And when you are mentioning the modules, there has to have your learning outcomes. So you need to mention the general learning outcome and module-wise learning outcomes as well. Now, the big plan template can be something like that. This I have taken from the SWAYAM website only. So you can refer that. So your planning should be in this particular format. Say, for example, my week 1 will be only about learning, introduction to learning outcomes. So I want my participants to get familiar with each other and what they are expecting to learn from this course in terms of a content, in terms of a activity, and in terms of a assessment. So those things I need to mention your table format, which we'll be talking about in module 1. Sorry, in week 1, they will have the video, multimedia e-content, including the graphic, animation, scenario, case study, and so on, depending on your course and depending on what variety of content you are offering in that particular week. Then activity, it can also be in terms of referring the various resources and preparing a report, or it can be practical assignment wherein you want your learner to go to the field, collect some information, prepare a report. So again, depending on your content and your target audience, you can design the activities and make sure that your activities should have a variety. It should not be very monotonous, or only one format of activity should not be asked. Then assessment through quiz. Some assessment may be for peer assessment and any other. I would like to here share one of my experience, wherein in one of the MOOC, we had been asked to design a lesson plan. And then we had been told to share our responses about everyone's lesson plan. So what we did, we used to give the feedback on everybody's lesson plan. So this is how we were improvising and we were learning from each other how we can better perform in that particular task. So that can be also one of the very good strategy, wherein you can ask them to have a peer assessment or peer feedback. Or any other mode, you can use it in assessment. Make sure that your assessment should not be monotonous and there should always be a variety in your assessment. Now, this is for resource planning. So you can have a table like this, wherein you can have the serial number, then the module title, then what will be the learning outcome? You can just mention one after another, depending on the content. Here you can mention the learning outcomes. Then what nature of resources I'll be using, whether it can be slides, videos, podcasts, e-content, and so on, blog or discussion and so on. So that also you need to mention here. So say, for example, serial number 1, my module is understanding OER. And these are my learning outcomes, right? I may just write 2-3 learning outcomes for the topic understanding OER. Then here I mentioned whether I'm going to provide them the video, which is recorded by me, or it can be someone ready-made video. So that also I need to mention here what are resources I'll be using for that particular content. Then comes the source, whether it's instructor developed video, or you can provide some online link if you want to go for any ready-made experts video, for which you may feel already that video is so good and it is so elaborative, there is no need to record my own video. So in that case, you also have some experts lectures or experts videos that you can provide, and you can just provide the link with the URL. Then duration.
needed for learners. So for this particular module, how much time I'm expecting my learner to devote? Maybe I may expect for a week, at least they should spend 5 hours. So that I need to mention here when I'm talking about the duration needed for the learners. And then what will be my assessment strategy? Maybe it is just the beginning, so I may have the quiz, or as my course proceeds, I can have the peer assessment, I can have a case study, I can have a field work and preparing a report. So as my course proceeds and as the difficulty and complexity level of the content increases, I may have a different variety of ways of assessment. So that this is how you can again bring the novelty and diversity in your assessment task. Now, as I said in the beginning, it's very difficult to sustain the interest and motivation. And even if you refer the researches, it has been found that the completion rate is very low, or learners loses the motivation once the course starts. Maybe in the beginning, they find the course very interesting, but later on, it is found that the course become very monotonous and they lose the interest, and there is a probability that learners may not complete the course. So what we have to do? What is the answer for this particular problem? So the answer is, we have to make the MOOC learner-centric. Till now, we are discussing this particular term in terms of learner-centric class or student-child-centered classroom. Similarly, that learner-centricity also need to bring in the MOOC if we really want to resolve this problem of sustenance of motivation and interest of the learner, or in order to increase the completion rate of the learner, what modification I need to do in a MOOC? So here is the answer, and the answer is learner-centricity in MOOCs. So in order to create a MOOC, an instructor creates lecture videos, provide exercises, clarify queries on discussion forums, and does the assessment. What all things I discussed till now, right? Wherein we are following the 4-quadrant model. I am introducing the e-content. I have the provision of discussion forum. I have also include the assessment quizzes in my lesson. But after that also, what is missing is learner centricity. Okay, so let us see how we can bring the learner centricity. So what we are missing? Attention to the learner motivation. As I said, as the days passes, the learner may lose the interest in the course and learner may feel not to complete the course. So we are missing the learner motivation. Getting learners to express their reasoning. Many times learners have a lot of questions. They are not able to reason out why this is so. It can be this way also. A particular problem may have this other perspective. So that reasoning also we are missing, which generally happens in a normal face-to-face classroom. Then opportunities for immediate micro application. The learner doesn't get immediate chance to put the queries and apply that in different situations. Generally in a normal physical classroom, if the child asks, ma'am, okay, what you are teaching is correct. It is from the textbook angle, it is okay. But if I want to apply this in my real life, how will I apply that? So at that time, we are ready to answer that query of a child. But these possibilities doesn't occur in MOOC. So that micro applications may not be existing in a MOOC. Formative assessment and instant feedback is missing, right? So you don't get the formative assessment and you don't get a chance to instant feedback, which generally happens in a physical classroom, right? Then explicit activities to foster peer learning. This peer learning is again missing, right? Which generally happens in a face-to-face classroom. So because of those components, it has been observed that, or it has been found by research that the retention or the completion rate is very low when it comes to MOOC. Ensuring learner connect during the MOOC. That missing, what is missing is human connect, learner connect. They don't feel they are talking to the human being. They don't like to sit in front of the machine and learn the things. So that component is also missing. Okay, so that learner connect is also missing. So how to overcome those? And the answer is, so if those things are missing, then what are the implications? Definitely low student engagement, low participation in discussion forum, and low completion rate. And the solution is LCM, that is need for learner-centric MOOC model. Now what it is and how to incorporate that. Let's have a look. So this learner-centric MOOC model is given by, I just show you the name of the person who has developed this model. So this is prepared by Murthy variant and
Sahastra Budhe. These are the people from IIT Bombay, and they have designed this LCM model. So if you are designing your MOOC course considering this LCM model, probably some of the problems of what we have discussed just now, that learner engagement or motivation, you can overcome those particular problems if you bring those elements in your MOOC. So let us begin. The first is LED, that is learning dialogue. So your content should be in terms of a dialogue. It should not be merely reading the content or watching the video. Student will not like it. And as such, our attention span is very less. So nobody would like to sit in front of the machine and listen your lecture. So in that case, what we can do? You offer a content in such a manner that as if they are talking to you. That is learning dialogue. So here, the content will be given and the reflection spot. Now, how we can do that? Suppose we are going for a quadrant 1, where we are preparing the video. So while preparing the video, make sure that sometime you are speaking, then in between the video get pause, some reflection question comes, the child has to answer that reflection question, then only the video will proceed further. So here the learner is active. But if you don't incorporate that element of interactivity in your video, learner will not feel engaged. Learner will not feel like, he is sitting alone and there is no interaction. So that can be overcome by bringing this LED element. LED means learning dialogue. So let your content be in terms of communication or in terms of dialogue, as if the learner will feel he or she is talking to the teacher, right? So here you can make use of, what I would say, H5P. So H5P provides you that particular provision where you can your video, you can insert the action again the video, so that way you can have your videos which will have some reflection spot. Now, what do you mean by reflection spot? Let the learner think of it. You have given some content, you have introduced some content and asking the learner to reflect on it. So learner is reflecting, then some question pop up, then the learner is giving answer. So this is how the learning is taking place, and the learner feels as if the teacher is in front of him or her and he's giving answer, and then his answer is getting accepted or rejected by the teacher depending on what answer the learner is giving. So that way we can bring the interactivity in the MOOC. Then second component is LBD. LBD means learning by doing. So here you can make them active or engaged. So you can design certain activities wherein learners will gain a hands-on practice. So in your MOOC, you will design certain activities wherein they were constructing something, they are doing something, they are designing something, they are making use of drawing tools, they are designing the concept maps, the mind maps. So that kind of activities wherein they feel they are not merely listening to the video or a lecture, but they are actively engaged in that MOOC by way of what activities the instructor has designed for them. And then customized feedback. Here you will not have a common feedback. Every student will be given a customized feedback. And when I say customized feedback, your feedback should also give them the hint why my answer is right, why my answer is not, why my answer is wrong. So that explanation also need to be provided. Then and then only we can make sure that the learner has understood. Many times teacher provide the right or wrong answer, but they don't provide the feedback. So if we add that customized feedback element in your MOOC, then the learner feel, yes, I'm not isolated. My queries are also getting settled. So that things will happen when you incorporate this LBD element in your MOOC. Now the third one is the LXT. LXT means learning extension trajectories. So what is expected here? We don't want our learner to stop here. So he has watched the video, he has listened to your lecture, he has done some activity and then is done. It's not that. Here, we are expecting the learner to extend their knowledge, because they should not have a way to incorporate everything in your course. But you want your learner to know something additional in relation to what you have taught through the course. So in that case, you can add some additional resources, additional URLs, which the learners may go and refer. So that will be additional resources which will be provided in terms of the extension trajectories. And you can have the assimilation quiz. Now, assimilation quiz will not be MCQs or will not be the knowledge-based questions. But here, you are testing how much he or she has assimilated, how much he or she has retained. So by way of providing the cases, you can check whether the learner has assimilated the content or not. So then you can have the assimilated quiz, maybe based on whatever you have covered in these two components, or maybe based on what resources you have provided, and they have gone through the resources, and now you want them to check
how much they have assimilated from the resource. So you are extending their learning and you are taking the learner beyond your content. So that is learning extension trajectories. Then LXI. LXI means learner experience interaction. So here the focus will be on developing the interaction. Focus question for discussion, peer interaction, and reflection quiz. So here, the focus of discussion is not merely to check their understanding, but to discuss with certain things with them, peer interaction. You can also have the group wherein they will be replying each other and they are discussing with each other. So that way, if we bring these 4 components in our MOOC, definitely we can make it learner-centric MOOC. So I hope everybody has understood and everybody will try to incorporate those elements. If anybody is planning to go for MOOC, make sure that you are bringing these elements so that you can make your MOOC more engaging, more interactive, and there is a possibility that the retention and the engagement and the completion rate will increase if you bring these 4 elements in your MOOC. Now coming to the various platforms. So as I have a shortage, I am really nearing reaching to 3 o'clock. So I won't take much of your time, as you must have, many of you must have explored. So I'll just tell you the names and I will not take you to those particular platforms. I request every one of you to please go to the websites and explore more about these platforms. So we have Future Learn, EDX platform, Coursera. We have Canvas platform, Udemy, Udacity, EPG Pathshala, and Khan Academy. So these are the various platforms where you can access the course and you can also apply for designing the course depending on the policies of each platform. So as you all are aware of this SWAYAM platform, I will request every participant to please note down this particular website and go to this particular platform and find out what all different courses are offered, just to understand the structure of MOOC and kind of assessment and kind of activities are planned out. So those things you can refer and you can design your MOOC. But unfortunately, I would again like to quote here, most of the courses which are there on SWAYAM, they are not based on the learner-centric MOOC model. So I request every one of you, so please design the MOOC courses considering that the engagement and the completion rate can be increased. Then we have Future Learn platform. This is a URL and website. So if anybody interested, please explore this platform as well. This is also a very good platform, provides an ample number of courses, depending on your hobbies and your liking, you can explore. Then we have EDX platform, and this is a URL, edx.org. Then we have Coursera, which is very familiar. Many of the universities, they have the tie-up with Coursera. Like in SNDT, we have a tie-up with Coursera, and many of our students are availing these various courses from Coursera as well. And they are earning the credit for that. As I said, we are following the CBCS pattern, wherein we are allowing our students to get some external courses and they in their mark sheet. So this is how they are really fortunate to have these different courses during their due course of program. Then Canvas is a very good platform. I am using this particular platform for 5 years and it's really useful, very learner friendly. You can explore more about this particular platform and you can upload your programs and courses on this particular platform, and you can this way flip your classroom and you can ask your students to refer the resources at home and conduct the discussion in your classroom. So I'm using this particular platform for past many years, and students, it's a very good response I'm getting, and students are really enjoying this way of learning. So you can go to the canvasinstructure.com. There you will find as a teacher or as a student, you can log in as a teacher and you can upload your courses on Canvas. Maybe some other time, if you would have been more time, I would have shown you how to upload your activities and programs and how to design the course on Canvas. But unfortunately, due to shortage of time, I may not be able to demonstrate you. Maybe some other time we can have such sessions wherein you can get a hands-on experience on how to upload the courses on Canvas. Then we have Udemy platform. Whatever platforms I'm discussing here, these are the very popular and very friendly kind of platform. These are the names of the platform which I am telling. Otherwise, there are n number of other platforms, but I am just telling you here those which are very popular. Then we have our own EPG Pathshala.
This is again a very good resource for the PG programs. Even in SNDT, we have designed a program of Introduction to Education Management, and our lectures and our resources are there in the APG Pathshala. So if anybody is interested, they can explore and they can learn management subject from that APG Pathshala. So please access that. Then Udacity. This is again a very popular platform. Then Khan Academy. Mostly this Khan Academy is very popular among school education, but there are other courses also on Khan Academy. So please explore this as well. As there is a shortage of time, I'm not able to demonstrate all those programs and all those platforms now. And this is a site which gives you 80 plus based MOOC providers. So here you will get a list of MOOC providers. Please explore this site and find out many more MOOC providers from this particular website. So I hope you are clicking the photo or whichever way it is possible, you are noting those resources so that maybe not now, but later when you feel you are planning to design any MOOC course, so you can definitely take advantage of these platforms. So these are few of the platforms, and this is a website which provides you a list of MOOC providers. Then coming towards the end, why MOOC? What are the advantages? So as we know, higher education is very expensive, and many times due to the many of the constraints, it is not possible for us to go to other places and learn the things. So at that time, MOOC is a boon. It is an advantage wherein I can learn many things which my course or which my program may not offer. Say, for example, I'm a teacher educator, but at the same time, I have an interest in music. So I can definitely access the course which are meant for music, and I can learn it for free. So that is the biggest advantage. Then open access, exposure to top level professors that would otherwise be unavailable to much of the world's population. And again, it will be a costly affair if we have to call any expert from any other country. So now this is freely available. We can listen their lectures, we can listen to the experts, and we can, broaden our, horizon of knowledge. Such courses offer admission to everybody. There is no constraint in terms of age, in terms of gender, in terms of background. So that is again a biggest advantage where admission is given to everybody. Courses are available to a vast and diverse audience across the globe. Learners' performance can be monitored easily using the data analytics. Many of the, like Canvas also provides you the data analytics. Our SNDT has our own Moodle. So that also provides us the data analytics, which shows the performance of the student in that particular program. So that is the biggest advantage of MOOC, which easily you can make use of data analytics to analyze the performance of your students and improve knowledge sharing, right? With the help of MOOC, we can reach out to the larger group, larger population, and this is how knowledge can be shared across the boundaries. So that these are some of the advantages. We also need to know some of the limitations. So sometimes, as I said, low and less completion rate because of the monotony of that particular MOOC programs. No special attention. Many times students feel they are not getting attention, or there is nobody to tackle their queries, or they are not given any feedback how they perform. So that is another limitation. Not available in regional languages. So that is the biggest disadvantage. But slowly now there are some courses which are coming on in SWAYAM also, which are in regional languages. So I'll encourage and motivate all the teachers to please develop some courses in regional languages. Accreditation related issues, many times they have the accreditation, like some universities, in our universities, we have the policy where those MOOC courses are getting accredited, but some colleges may not consider, or they may not give the weightage in their, performance. So that can be sometimes maybe a issue related to the MOOCs. Problems in transfer of credit, if you don't have such policies, but if you have such policies, there won't be a problem. And then sometimes it may be costly affair in terms of, especially when we are talking about SWAYAM guidelines, they require those quality camera and all those aspects. So sometimes it may become a costly affair for the one who wants to design the MOOC. So these are some of the limitations. But again, though these are the limitations, I will go back to the advantage, and I will request everyone to design more and more MOOCs so that we can make the higher education also accessible to all. We have a primary education accessible to all, but still higher education has not reached to the masses.
So I'll request every one of you to design at least 1 or 2 MOOCs, maybe pertaining to your subject or maybe pertaining to your hobbies and interests, so that we can, some way we can, meet the needs of the population and the masses. So with this, I would like to end it here. And I think it's 3:05. I have extended 5 minutes more. Now the time for question and answers. And I'm sorry I could not get the MCQs, but I'll send it later because of the shortage of time and because of my other commitments. I really did not get the time to prepare the MCQs. So with this, I'll end it here. And thank you so much for giving me the opportunity. It was indeed a great pleasure. Thank you, Dr. Pagat, for giving me the opportunity. And I hope I could serve the purpose of the FDP. Thank you so much. Thank you very much. I'm done from my side. So now I'm stopping sharing my screen. Yes, ma'am, I'm done. If anybody has any queries, they can post it either in a or they can unmute and they can ask the questions. I'll stop sharing my screen. Yeah. Thank you so much. The participants can unmute themselves. You've been enabled. In case you have any query, you can unmute yourself. Ma'am, in case they do not have Good any afternoon, query, ma'am. then Jasleen ma'am, you can go ahead. Yes, Good there's somebody. afternoon, ma'am. Yeah, Yes, please. ma'am. Myself, Ruchi, Government College for Girls, Ludhiana. Ma'am, I just want to ask one thing again. The courses which ma'am just discussed all from MOOC और स्वयं, तो मैम ये कोर्सेज का प्रोफाइल में बायोडाटा में हमें प्रॉपर क्रेडिट मिलता है या स्टूडेंट्स को फर्दर फ्यूचर में इसके क्रेडिट्स मिलेंगे? सी मैम, ये आपकी यूनिवर्सिटी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है. लाइक इन एसएनडीटी वी हैव दैट पॉलिसी, सो हम क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं. आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में सीबीसीएस पैटर्न फॉलो करते होंगे, या फिर अभी जो एनईपी आ रहा है हमारा 2020, वो भी ये बात कर रहा है कि आपको ऐसे कोर्सेज देना है जहां से वो बच्चे क्रेडिट ट्रांसफर कर सके या कुछ अलग चीजें भी सीख सके. सो मे बी इन फ्यूचर, राइट नाउ यू माइट नॉट बी हैविंग दैट पॉलिसी, बट next in coming 1 or 2 years, this will be the mandatory component for everyone. So maybe after that you will get the credit transfer. जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड आंसर. थैंक यू. I can see some questions in the chat box. Mr. Vijay is asking. Just a minute. I could see. Yeah. Yes, ma'am. One The second. question is how credits for a MOOC is decided. Yeah. It again, you have a particular committee set up by the university or a college, and then they, like how we design our courses. Same way, you have to have a committee which will be deciding how many credits and for how much duration. Will the 1 credit or 2 credit course will be only be allowed, or you can also offer a 4 credit course. That is entirely a university policy, and dedicated committee is formed, and they decide the structure and everything for this. Generally, I'll just like to give one example here. Like in our university, 1 credit equal to 15 hours. And in terms of marks, it is 25 marks. So like that, the credit is getting interpreted. But again, it differs from course to course and content to content. Okay. So that is how you will have those credit pattern. Any other question, ma'am? I think, ma'am, you are muted. We are not able to hear you. Participants, you can unmute yourself. You've been enabled to unmute yourself. Yeah, thank you, participant, for a very good feedback. Thank you very much. It really encourages and it is really a motivation for me to have more and more such kind of sessions. Thank you very much for your appreciation. Yeah. So with your permission, ma'am, shall we end the session if there are no questions? Yes, ma'am. Dr. Jasleen, you can proceed further. Yes, over to you, ma'am.
Thank you, Dr. Manu. Again, it is with a great sense of gratitude that I would like to extend my heartfelt thanks to our esteemed speaker, Dr. Rekha, for delivering such an exceptional, informative, and enlightening session on the design and development of MOOCs using OER. I think in today's rapidly evolving educational landscape, a discussion, a discourse on MOOCs and the utilization of OER is very, very important. It has become very significant. Ma'am, you not only elucidated the intricacies of designing and developing a MOOC, encompassing the course outline, course objectives, the various learning assets that we need to incorporate, and more importantly, how to make a MOOC student-centric so that the student engagement levels are always maintained at optimal level. You also delved into the integration of OER, thereby shedding light on the pivotal role it is playing in shaping the future of education. Ma'am, your knowledge, your expertise, it is nothing short of inspiring. Thank you from the bottom of our hearts for captivating our attention and broadening our perspectives. I think the comments in the chat box, the feedback that every participant has given is a testament of that. So thank you once again for being a part of this faculty development program. Thank you, Dr. Manu. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Rekha. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you, ma'am. Yassine, and thank you all the participants. So we'll be seeing you tomorrow again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Vanessa. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.